Assalamu alaikum students. This is your sixth chapter in science by name conservation of plants and animals. Okay, students, we as a human beings uh, live with for plants and animals in our society, in our country, in our world. We have human beings and also forest where there are bulk of plants, various plants, thousands of thousands varieties of plants, and also in this world except human along with human being there are thousands of thousands creatures which we call animals. But with all animals we do not deal. We only stay with some selected domestic animals. Okay, we cater them and we breed them. Okay, and we domesticate them, such as goats, cows, buffaloes, hens, chickens, dogs, cats, etc., etc. Similarly, in many houses we can find there are big gardens. Some people, what they do, if they have two plots, they construct a house in one plot and they make a garden in another plot wherein they will uh, plant trees. Okay, they will grow a trees, they will grow a plants. So in our daily life we come across many various plants and animals, and for living being, for the life of our human beings, we need both plants and also animals for our various requirements, for our food, for our shelter, for even for our oxygen, even for our respiration we need plants. So without plants there is no life on the earth. Without plants there is no existence of life on the earth, because in human beings, uh, during respiration they get oxygen from plants itself, and they exhale the carbon dioxide gas. They liberate carbon dioxide gas that is fetched and catched by plants for their preparation of foods. Though plants and animals, they are co-independent. They are mutually independent on each other. So because of this independence, because of the they are mutually dependent, not independent. They are mutually dependent on each other. Human beings, animals, and plants. These three are mutually dependent on each other. Okay. So when we came to know that our we have deep and keen requirement of plants and animals, then it is our first and foremost duty to conserve them, to protect them, to serve them, to secure them. Okay. So conservation of plants and animals is most important topic, most important concept which we follow in our daily life, which we practice in our daily life, and we have to practice in our daily life for the existence of life on this planet. So let us see how the plants can be conserved. The very first topic in this chapter is deforestation and its causes. Okay, deforestation. What do you mean by deforestation? Okay, they are the great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organization is deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. We know that our India and also our world is very rich in forest. Okay, India has very dense quantity of land of forest. Okay, so deforestation means removing all the plants from the forest by various means, by cutting the trees or by burning the trees, or by using the chemical to damage their roots, and by roots uh, and and by removal of the trees by roots itself.
So these are the various methods to deforest. So okay, so deforestation is the removal of plants from the forest for the purpose to use that land for any other construction, for any other business, etc. So बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन मीन्स झाड़ों की और जानवरों की हिफाजत करना। आप बेहतर जानते हैं बच्चों कि आज हमारी जिंदगी, आज नहीं बल्कि शुरू से, स्टार्टिंग से, जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं उस वक्त से लेकर अब तक इंसान का जिंदा रहने के लिए झाड़ और जानवरों की बेइंतहा जरूरत है। इंसान अपने सांस लेने के लिए झाड़ों पे डिपेंडेंट है। झाड़ के अंदर से ऑक्सीजन निकलता है, वो हम सांस लेने के लिए रेस्पिरेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड झाड़ों में इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए। सो ये झाड़ और ये इंसान और ये जानवर दोनों तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और हम डेली लाइफ में बहुत से जानवरों से हमारा साबिका पड़ता है और बहुत से जानवरों को हम घर में पालते भी हैं। जैसे कि डेयरी फार्मिंग में हम भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरियां पालते हैं, घोड़े पालते हैं और हमारे घर में कुत्ते और बिल्लियां हम पालते हैं। तो ये सारे जानवर हमारी जरूरत की चीजें हैं। तो जानवर को हमारी जरूरत है और हमको जानवर की जरूरत है। झाड़ को हमारी जरूरत है और हमको झाड़ की जरूरत है। जानवर को झाड़ की जरूरत है और झाड़ को जानवर की जरूरत है। इस तरह इंसान, जानवर और झाड़, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है। तो जरूरी है कि हम बतौर इंसान इन जानवरों की और इन झाड़ों की हिफाजत करें। ये हमारे लिए बेइंतहा जरूरी है। झाड़ों की हिफाजत करना, झाड़ों को कंजर्व करना, ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो आइए इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स, हमें, आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारी जमीन जंगलात की है, यानी जंगलों की बहुत बड़ी जमीन इंडिया में है। इसके अलावा भी द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, यू हैड आई थिंक फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जंगलात के नाम भी आपने सुना होगा। तो इस तरह सारी दुनिया में बहुत सी जमीन पर जंगल फैला हुआ है। तो इन जंगलों से झाड़ों को काटने का नाम डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। झाड़ों को काटने के 3 तरीके हैं। या तो झाड़ों को जमीन के ऊपर से काट कर अलग कर दिया जाए, या फिर झाड़ों के जड़ों पर केमिकल वगैरह डालकर जड़ों के साथ झाड़ों को बाहर निकाल दिया जाए, या फिर झाड़ों को जलाकर जमीन को जंगल को साफ कर दिया जाए। और इसके पीछे बहुत से वजूहात हैं। जैसे कि अगर किसी जमीन पर जंगल है तो और अगर हमें उस जमीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ बनाना है, तो कुछ बिल्डिंग वगैरह, कुछ और काम करना है, कुछ खेती बाड़ी करना है, तो हमें उस जंगल को साफ करने के लिए वहां के सारे झाड़ों को काटना होता है, ठीक है। और इसके बहुत से सारे रीजंस है। फॉर एग्जांपल, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। खेती बाड़ी के लिए जमीन को तैयार करने के लिए भी झाड़ों को काटा जाता है। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, घरों की तामीर करने के लिए, घर बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी जंगल के झाड़ों को काट कर जंगल को साफ किया जाता है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और झाड़ की लकड़ी को इस्तेमाल के लिए भी, झाड़ की लकड़ी को काट कर इस्तेमाल करने के लिए भी झाड़ को काटा जाता है। Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. उसके अलावा now second topic है conservation of deforestation, consequences of deforestation, consequences मतलब नतीजा, रिजल्ट। डिफॉरेस्टेशन की वजह से रिजल्ट, उसका नतीजा क्या हुआ, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का अंजाम क्या होता है, जरा देखें। They remembered that for temperature and pollution level on the earth, it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmad that if cutting trees continues, rainfall and the fertility of the soil will be affected and it will be decreased. Moreover, there will be increased chances of